Hello class ninth. Today I am going to start with the methods of safe disposal of waste. Waste is, as you know, the waste are of so many kinds. Their disposals also requires different suitable methods. These methods mainly include segregation, dumping, compositing, drainage, treatment of effluents before discharge, incineration, and scrubbers. Okay, here are 7 points which are used for safe disposal of waste. Okay, now first point that is uh, segregation. As you know, segregation means separating the refuses. Okay, refuse mainly into 3 categories. ठीक है, हम सेग्रीगेशन में सेपरेशन करते हैं किसका, रिफ्यूज मैटर का इनटू 3 कैटेगरी: रीयूजेबल, डिग्रेडेबल and non-degradable Okay, now in this segregation we separate separating the refuse mainly in 3 categories: reusable, degradable and non-degradable. Now reusable waste includes items such as paper, newspaper, old book, discarded exercise books. Can you imagine the bulk of examination answer books piling up into the tons and tons of weight? All such paper can be recycled. The metallic components also can be separated and reused. Now second one is degradable, such as organic waste, peel of vegetable and fruits can be decomposed into the useful manure. Such degradation involves the activity of microorganisms, so it is also called biodegradation. And third one is non-degradable parts such as a certain plastic can be dumped. Now next one is dumping. Okay, the non-degradable waste can be put at certain places, especially dug up pits away from human habitation. ठीक है, एक गड्ढा खोद के हम उसमें नॉन डिग्रेडेबल चीज़ों को पिट के अंदर डाल के रख देते हैं जहाँ पर ह्यूमन हैबिटेशन नहीं होता है, दैट इज डंपिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज कंपोजिटिंग. Compositing mainly putting the waste organic matter to decay so that it can be used for fertilizing the agriculture land, that is compositing. ओके, कंपोजिटिंग में हम क्या करते हैं, ओखला खाद दिल्ली में बनती है. ठीक है, क्वाइट पॉपुलर. फॉर एग्जांपल इन दिल्ली व्हाट इज नोन एज ओखला खाद इज मेनली द गार्बेज, फूड वेस्ट. ठीक है, फूड वेस्ट होता है एंड ह्यूमन सीवेज, नाइट सॉइल. ठीक है, उसको पूरा कंपोजिटिंग करके हम क्या बनाते हैं, ओखला खाद. ऑन द लेटेस्ट मैथड इट इज यूज्ड ड्राई कंपोजिटिंग toilet. This is hygienic and cost effective solution to human waste disposal. Now next one is drainage. A proper system of drains is required to carry away all kind of fluid waste other than sewage. If not done, so the watery fluid would accumulate in the pits and puddles and will become the breeding place for mosquito and other harmful insects. Now next one is the treatment of effluents before discharge. The industrial and municipal waste water are treated in effluent treatment plants. Okay, उनको क्या बोलते हैं, effluent treatment plants. Okay, before disposing them off in the water bodies, this is done in the 3 part: primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. Okay, primary treatment, secondary treatment and tertiary treatment. In primary treatment, separation of large debris by sedimentation in the tank. Okay, this one is primary treatment. Treatment में हम क्या करते हैं, sedimentation का process होता है. Which process? Sedimentation. Now second one, secondary treatment is a
biological treatment. The wastewater is dumped into the oxidation pond where microorganisms like bacteria and viruses, algae oxidize the organic matter releasing CO2 and the solid precipitate material that is called sludge. That is called sludge is produced and can be used as manure. Now tertiary treatment involves the removal of the dissolved chemical matter or even metals or even pathogens, and then the wastewater is discharged into the natural water or is used for irrigation. Now next one is incineration. Incineration is a disposal of waste by burning. Disposal of waste by burning in this process. Okay. By this method, there three main purposes of this method incineration. First main purpose is to reduce the volume of waste. Reduce the volume of waste. Second purpose क्या होता है? Reduce the weight of the waste. Reduce the weight of the waste. And third one, renders toxic waste into less toxic or even non-toxic waste. Okay, renders toxic waste into less toxic. Okay, as a three purpose of the incineration: reduce the volume of the waste and reduce the weight of the waste and render the toxic waste into the less toxic. Now impact of incineration: releases fumes and harmful substances. इम्पैक्ट क्या है? अगर हम किसी चीज को जला रहे हैं तो क्या कॉज करेगा? हार्मफुल फ्यूम्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस ओनली. प्रिकॉशन. ओके, प्रिकॉशन in incineration. Precaution incineration should be carried out at very high temperatures, should be equipped with pollution control devices. Incinerators should be installed away from the residential area. The leftover after incineration contains about the 25% of the waste residue as an ash. Waste residues में क्या होता है? Ash होता है. The ash should be deposited in landfills. Now next one is a scrubber. Okay, what are the advantages? Precaution and then advantages of this incineration process. Advantages: ash leftover occupies much less landfill space. अगर हम ash को dump करते हैं तो landfills में तो कम space लेता है, लेकिन अगर हम पूरा का पूरा volume के साथ करेंगे तो take more space. ठीक है. सेकेंड प्रॉब्लम है द रेजिड्यूज ऑफ बॉटम ऐश कैन बी यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ सम मेटल इन इट. सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक वायर है, आप उसको इंसिनरेट कर रहे हैं तो वो वायर तो जल जाएगी, उसका जो मेटल है वो आपको मिल जाएगा. दैट इज सेकेंड एडवांटेज. सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम द हीट रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग. जब हम बर्निंग प्रोसेस करते हैं तो उससे जो हीट जनरेट होगी, दैट इज द एडवांटेजेस. तो थ्री एडवांटेजेस. फर्स्ट, ऐश लेफ्टओवर ऑक्युपाइज मच लेस लैंडफिल. And the second advantage, residual bottom ash can be used for the recovery of some metal in it, and electricity can be generated from the heat released during burning. Now next one is scrubber. Okay, scrubber are the devices. Scrubber क्या है? Device है. It is a devices to remove the gaseous and particulate air pollutant. ठीक है, वो क्या करता है? gaseous and particulate air pollutants को remove करने के, air pollutants को remove करता है. Okay, in these the air is passed through a dry or wet packing material. The air passes out by the scrubber is dust free, clean, as well as free of contain gaseous pollutant which get dissolved in the wet packing. Now next one in scrubber, that is electrostatic precipitators. Electrostatic precipitators. Electrostatic precipitators. The dirty air containing particulate is passed through a chamber containing electricity
charge plate, the particles may be naturally electrically charged as they pass through the charge plates of the precipitators. They get collected on the plates carrying opposite charge, and then clean gas passes out. The electrostatic precipitator can remove up to the 90% of particulate matter from the thermal plants. Now see here the structure of the scrubber and the electrostatic precipitator. See structure of scrubber. हाँ दिस वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्रबर, दिस वन इज स्क्रब, ठीक है। यहाँ से वाटर स्प्रे होता रहता है फ्रॉम हियर, वाटर स्प्रे, दिस वन इज स्क्रबर, this one is scrubber, okay, water spray, and here dirty air, dirt air enter from here, dirty air, okay, goes upward, यहाँ से ऊपर जा रही है, और यहाँ पे एक पैकिंग लगाई है हमने, दिस वन इज पैकिंग, दिस इज पैकिंग स्क्रबर में, और ये वाटर स्प्रे है तो यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स आती है, दिस इज वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉप्स, ओके। फिर यहाँ से जब डर्टी एयर जाता है पैकिंग के पास आता है तो यहाँ पे इसको क्या करता है, मॉइस्चर मिलता है, जो डर्ट एयर होती है, डर्ट होता है एयर के अंदर, वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है इन दिस पैकिंग एरिया, और जो यहाँ से एयर जाती है आफ्टर दिस वाटर स्प्रे, वहां से जो एयर निकलेगी दैट इज क्लीन एयर, that is clean air. This is the structure of the scrubber, ठीक है। See, this one is the dirty air outlet, inlet, यहाँ से इनलेट अंदर गया डर्टी एयर, यहाँ से डर्ट एंड एयर पूरा यहाँ जा रहा है पैकिंग एरिया में, यहाँ पे वाटर स्प्रे चल रहा है पानी, ठीक है। और जैसे एयर ऊपर जाती है तो वाटर ड्रॉप्स क्या करती है, नीचे की तरफ आती है पैकिंग एरिया पे, और वहाँ पे सारी डर्ट क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, जो यहाँ से एयर ऊपर जाएगी दैट इज ओनली क्लीन एयर, दिस इज द स्क्रबर। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, next one is electrostatic precipitator. See the structure of the electrostatic precipitator. This one, okay. यहाँ पे हमने एनोड और कैथोड के रॉड्स लगाए हुए हैं, ओके, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, ओके। एंड डर्टी एयर यहाँ से जाएगी अंदर, दिस इज डर्टी एयर इनलेट गोज, देन यहाँ से जा रहा है, यहाँ से यहाँ से, ठीक है, ओके, एंड फ्रॉम हियर आल्सो। एंड चार्ज प्लेट्स, दिस वन इज चार्ज प्लेट्स, okay, goes up and the particles may naturally electrically charge as they pass through the charge plate. The precipitator get collected on the plate, carry opposite charge and clean gas passes. जो डर्ट पार्टिकल होते हैं वो भी चार्ज होते हैं, सपोज डर्ट पार्टिकल अगर नेगेटिव है तो वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा विद दिस पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास यहाँ पे अटैच हो जाएंगे डर्ट पार्टिकल्स, और यहाँ से जो एयर रिमूव होगी दैट इज ओनली क्लीन एयर, okay. The basic concept behind this electrostatic precipitators, this one is the structure of the electrostatic precipitator. The basic principle behind it, the particle may be naturally electrically charged and they pass through the charge plate from here, and the charge plates of the precipitator, they get collected on the plate carrying opposite
charge and then clean gas pass out, the electrostatic precipitator can remove up to 90% of a particulate matter from the thermal plant. From the thermal plants. Okay. Now write down questions for revision in your, do it in your notebook. Write down. First question, number 1. Write short note on first scrubber with diagram, scrubber, and second one electrostatic precipitator. Electrostatic precipitators. Okay. Now question number 2. What is incineration? Write precaution and advantages of, write any two precaution and advantages of it. Okay. Now it means incineration. Question number 3. Write the method of preparing compost. Write the method of preparing, कि कंपोस्ट कैसे बनाएंगे, preparing compost. Okay. And one more question, number 4. What is baggage? Do it in your notebook. Thank you, class.